Hello student. So let's start the new Ayurvedic topic, the Indriya Shariram. So Indriya, definition of the Indriya. Indriya means शरीर से युक्तम ध्यान करना मतीन्द्रिय मिंद्रियम मीन्स जो शरीर से संयुक्त होते हुए हमारे को ज्ञान प्रदान करता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंद्रिय. सो इंद्रिय के बिना आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता. सो द इंद्रियज आर 11 in numbers. Out of these 5 are Gyanendriya, 5 are Karmendriya and the 1 are Ubhendriya, that is called the Man. So Gyanendriya are Shotrendriya means the Karna, Sparshanendriya, Chakshurendriya, Rasnendriya and the Ghanendriya. And the Karmendriya, that is the Hasta, Pad, Guda, Upastha means Janendriya and the Vagendriya means that is the Jivva. So and the Ubhyatmak Man. So in this way, that is the total Indriyas, they are present in our body. So let's see the details of this Indriya. So here in this shloka, you know Sankhya and Prakar of the Indriya. Tadhyata Shotra Tvaka Chakshu Jivva Grhana Vagastopastha Payu Pada Manansiti Tatra Purvani Pancha Buddhendriyani Itarani Pancha Karmendriyani Ubhyatmaka Mana. मीन्स श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह ज्ञानेंद्रिय है तथा हस्त, पाद, जिह्वा, पायु, उपस्थ यह कर्मेंद्रिय है और मन जो है यह उभयात्मक है. सो इस तरह हमारे शरीर में दैट इज दी 11 ज्ञानेंद्रिय जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. सो हियर यू कैन सी दी इंद्रिय नाम महाभूताधिक्य एंड विषय. सो कर्ण here महाभूताधिक्य आकाश महाभूत and विषय शब्द. त्वचा that is वायु महाभूताधिक्य स्पर्श विषय. then the नेत्र तेज महाभूताधिक्य और विषय रूप. जिह्वा आप महाभूताधिक्य और विषय रस. and नासा पृथ्वी महाभूताधिक्य और विषय गंध. so same like this the पंच कर्मेंद्रिय कार्य. So here in this shloka you can see हस्तो पादो गुदो पस्थे जिह्वेन्द्रिय मंधापि च कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पादो गमन कर्माणि पायुपस्थो विसर्गाते हस्तो ग्रहण धारणे जिह्वा वागेन्द्रिय वाक् च सत्या ज्योतिस्तमो अनुवृत्ता. मीन्स पैर या पाद उनका कर्म जो है चलना और फिरना. हस्त उनका कर्म जो है ग्रहण करना और धारण करना. पायु मीन्स गुद उनका जो कर्म है मल विसर्जन. उपस्थ जो है उनका कर्म मूत्र विसर्जन, शुक्र विसर्जन व आनंद देना. और जिह्वा मीन्स वाणी उनका कार्य जो है वाणी उत्पन्न करना. अब वाणी जो है 2 प्रकार की होती है, सत्य और असत्य वाणी, जिससे हमको सत्य और असत्य का जो है वो ज्ञान होता है. सेंसरी ऑर्गन दैट इज द जिह्वा. सो पर्याय नेम्स रिलेटेड विद द जिह्वा दैट इज द रसना, इट इज आल्सो कॉल्ड द रसनेन्द्रिय, वागेन्द्रिय दैट इज आल्सो कॉल्ड द गो जिह्वा और द जिभ. सो द उत्पत्ति ऑफ द जिह्वा. सो हियर इन दिस श्लोका यू कैन सी जिह्वा कफ शोणित मांसाना सारो जिह्वा प्रजायते. मीन्स कफ शोणित मीन्स रक्त और मांस के सार भाग से जो है वो जिह्वा तैयार होती है. देन रसनाख्या बोध कफाधिष्ठान भवति. मीन्स जिह्वा के जगह पे बोधक कफ का अधिष्ठान जो है वो रहता है. देन दश प्राणायतानानि च मूर्धा जिह्वाबंधनम कंठो हृदय नाभि बस्ति गुदम शुक्रजो रक्तम च तेषा आद्यानि सप्त पुनः महामर्म संज्ञानि. मीन्स देयर आर द 10 सीट्स ऑफ लाइफ दैट इज दश, दैट इज कॉल्ड द दश प्राणायतन. और दश प्राणायतन में दैट इज द जिह्वा का वर्णन जो है वो किया हुआ है. आफ्टर देन दी सप्त सेवन्य शिरासी विभक्त पंच जिह्वा शेफ सोरे कैका. मीन्स जो हमारे शरीर में सप्त सेवनी जो रहती है उसमें से एक सेवनी जो है जिह्वा के नीचे मीन्स जिह्वा में जो होती है दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम.
So these are the description that should be included into the Ayurveda Sanhitas related with the tongue. In the next sensory organ, that is the netra or eyeball. So first, that is the shape or panchbhautikva related with the netra. So for this, let's see the shloka. So here in this Sauruttam Gostanakara Sarvabhuta Gunadbhavam Palam Bhuo Anikto Rakta Vatata Krishna Sitanjalat Akashad Ashru Margascha Jayante Netra Budbhude. Means netra golak jo hai, the shape of the netra, that is gostanakar, means go stanakar, that is the shape of the netra or eyeball. Then the next alochaka pitta drukhastham rupa lochana smrutam, means due to the presence of the alochak pittam we are able to get the knowledge of the sight of the vision. Then next to it, that is mandalani cha sandhischa patalani cha lochane yathakrama vijaniyat pancha shataccha shadevacha, means नेत्र में 5 मंडल 6 संधि प्रेजेंट रहते हैं. मंडल रिलेटेड विद द नेत्र. नेत्र श्लेष्मेन प्रसादात सूक्ष्ममंडल तथा पितृजम असृज कृष्णमंडलम तस्मात्रुजम मध्ये दृष्टिमंडलम तदुयात्मकम, मीन्स 5 मंडल पक्ष्ममंडल वर्त्ममंडल श्वेतमंडल कृष्णमंडल and the दृष्टिमंडल. So according to this diagram, so you can see that is Pakshma Mandal means that is the eyelashes. Vartma Mandal means that is the eyelids, upper eyelid and the lower eyelid. Shweta Mandal means that is the white part, means that is the sclera. Krishna Mandal means that is the black part which is present inner to that the eyeball, that is called the iris. And the Drushti Mandal means that is the opening present between that the iris, that is called the pupil. So these are the 5 mandals related to that the eyeball. After then Che Sandhi. So Pakshma Vartmagata Sandhi means that is the eyelashes and the eyelids where that should be attached. So that is called the Pashma Vartmagat Sandhi. Do number Vartma Shvetagata Sandhi means that is the eyelid is attached to that the white part, that is the sclera, that is called the Vartma Shvetagata Sandhi. Then Shweta Krishnagata Sandhi, that is called the limbus where that is the sclera, it is attached to that the black part. Then the Krishna Drushtigata Sandhi means that is the iris and the pupil where that should be attached. So that is called the Krishna Drushtigata Sandhi. Then Kaninaka Sandhi means Anta Sandhi where that is the upper eyelid and the lower eyelid they are attached, that is called the Kaninik Sandhi. And last, that is the Apanga Sandhi means that is the outer Sandhi where that is the upper eyelid and the lower eyelid, it should be attached with each other. Then so patal. So patals are 6 in number, and out of the 6 patal, the 2 patals are present in the Vartma means that is the upper eyelid and the lower eyelid, and the 4 patal are remaining which are present inside to the eyeball. So let's see that is the shlok related with that the patal. So dve Vartma patale vidyat चार्त्वा यन्यानि चाक्षिणी जायन्ते तिमिर येषु व्याधि परम दारुण तेजो जलाश्रितं बाह्यो तेष्वन्यतः पिशिताश्रितं मेदस्तृतीय पटलामाश्रितं त्वस्ति चापरम पंचम मास समय दृष्टेस्तेषा बाहुल्य मिश्यते. मीन्स प्रथम पटल जो है वो तेज व जलाश्रित है, द्वितीय पटल जो है वो मांसाश्रित है, तृतीय पटल जो है वो मेदाश्रित है, और चतुर्थ पटल जो है वो अस्थि आश्रित है. एंड उसमें से 2 पटल्स दे आर प्रेजेंट इन द वर्तमा. सो टोटल 6 petals are related with the eyeball. So that is the description which is observed into that the different Sanhita.
So the next sensory organ, that is the karna. Karna, it is also called Paryayi Shrotrendriya or Shrotra. So first shloka related with that the karna, that is Sankhya. So karna yodve means there are the 2 ears are present in the human body. Then the sandhi. So sandhi ganda karne shankhe shvaikaika means there is only one sandhi is present between the karna and the shankha. Then next to it grhana karna griva vakshi kosheshu tarunani means the tarunasti are present in the nasa, karna, griva and the akshi. Then next to it shotra shrunga takeshu shankhavarta means the type of sandhi present in between the ear ossicles, that is the shankhavarta. Then dve karna shashkule dve karno putriko means there are 2 karna shashkuli and the 2 karna putrika are present. Then the mala of the karna. So here you know that is into that the external auditory meatus there is the karnamal is present. So karnamal that should be formed by the mala of the mansa dhatu and the majja dhatu. Then in relation with the karna there are the 10 siras are present. So out of these 4 are the vatvaha, 2 are the pittavaha, 2 are the kapvaha and 2 are the raktvaha. Apart from this, that is the 2 shabdavaha sira are also present. So these 2 shabdavaha sira, it should be pursued the shabda or the words into that the internal ear, and if injury should be occurs to this sira, shabdavaha sira, so it can occurs the deafness. So these are the description related with the karna into that the Ayurvedic Sanhita. The next to sensory organ, that is the nasa or nose. So the synonyms of nose, that is the Ghanendriya, Gandha Indriya, that is also called the Ghrand, Nasika or the Nasa. Then next to it, that is the shloka related with that the Nasa, that is Nasa Ghanendriya Sthanam means it is the seat of organ of the smell. सो घ्राण गंधानी पार्थिवम मीन्स पृथ्वी महाभूत का जो विशेष गुण होता है दैट इज़ दी गंध, वो गंध का ज्ञान जो है ये नासा अवयव से हमको होता है। उसके साथ ही श्वास और उच्छ्वास का कार्य मीन्स रेस्पिरेशन फंक्शन दैट इज़ आल्सो डन बाय दिस ऑर्गन, दैट इज़ दी नासा। देन नेक्स्ट टू इट दैट इज़ दी अत्र बहिर्मुखे द्वे स्त्रोतासी मीन्स जो बहिर्मुख स्त्रोतस है उसमें से 2 स्त्रोतस का वर्णन जो है वो नासा का इसमें आया है। देन नेक्स्ट टू इट दैट इज दी मेदो घ्राणंच जिह्वाच कफस्य सुतरा मूरः मीन्स नासा यह कफ का स्थान है। देन उर स्थान मुदानस्य नासाभिमंगलाश्चरेत वाक प्रवृत्तीय प्रयत्नो अर्जाल बल वर्ण स्मृति क्रिया मीन्स नासा यह उदान वायु मीन्स दैट इज द प्राण वायु का स्थान है। आफ्टर देन दी स्वांगुली प्रमाणेन चतुरंगुल्या नासिका मीन्स स्व अंगुली से अगर तुम मेजरमेंट करते हो सो दैट इज दी 4 अंगुल प्रमाण जो है वो नासा का हमारे शरीर में होता है। देन अभ्यंतरतः तत्र फणे मर्माणि मीन्स हमारे शरीर में जो मर्म होते हैं 107 जो मर्म होते हैं आउट ऑफ दिस दैट इज द फण मर्म इज प्रेजेंट इन रिलेशन विद द नोज। देन related with the nose that is the called the nasa hi shiroso dwaram and that is the basic principle which is help to use the treatment of the shiro rog. So throughout the nostrils or the nasa that is the many medication that is the ghruta tel that should be inserted into that the nose and that should be treat the shira roga so that the nasa it is called the shiroso dwaram. So these are the description related with the nasa in the Ayurveda Sanhitas.